अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तलत अफजा से मैक्रो इकोनॉमिक्स के 28 लेक्चर में हो रही है। आज का लेक्चर बेसिकली कंटिन्यूशन है पिछले ही टॉपिक की जो हमने पिछले चंद एक लेक्चर्स में शुरू किया, और उसमें हम बात कर रहे थे कि केन्सियन व्यू ऑफ द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। और उसमें सबसे पहले हमने ये कहा कि फोकस ऑफ द केन्सियन इकोनॉमिक्स है कि हमारे पास इकोनॉमी की परफॉर्मेंस लो होने की वजह सिर्फ और सिर्फ सप्लाई साइड नहीं है, रादर द लो लेवल ऑफ द एग्रीगेट डिमांड जो है दैट आल्सो एक्सप्लेन्स कि हमारे रिसेशन जो है व्हाई दे प्रिवेल इन इकोनॉमी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एग्रीगेट डिमांड लेवल वी आर ट्राइंग to explain it with the help of the IS curve, which is the investment saving curve, and it represents all combination of the interest rate and the income level, and all of these combinations they represent the equilibrium in the goods and services market. दूसरा component जो है वो that is the LM curve, which gives us the combination of the interest rate and the income level, which represents the equilibrium in the money market. और IS और LM कर्व जो है बिहाइंड द सीन वी वर ट्राइंग टू सी कि हम किस तरह IS कर्व डिराइव करते हैं और किस तरह जो है हम LM कर्व जो है वो डिराइव कर सकते हैं। तो आज बेसिकली पिछले लेक्चर के एंड पे हमने ये देखा था कि हम IS कर्व को ड्राइव करने के बाद और LM कर्व को ड्राइव करने के बाद इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट एज वेल एज द गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट एक ऐसे पॉइंट के ऊपर जो कि रियल इंटरेस्ट रेट एंड द इनकम लेवल सेम फॉर द इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट एंड द इक्विलिब्रियम इन द गुड्स मार्केट रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर शुरू करूं, मैं ये चाहूंगी कि पिछले लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लें ताकि मोमेंटम गेन करने के बाद जो है हम आज का अपना नया टॉपिक जो है वो शुरू कर सकें। तो पिछले लेक्चर्स में बल्कि चंद एक लेक्चर्स में हमने IS कर्व की डेरिवेशन को देखा, और IS कर्व की डेरिवेशन के पीछे जो है मेन जो हमारा हाइपोथेसिस था दैट वाज द केन्सियन क्रॉस। केन्सियन क्रॉस में हमने ये कहा कि हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इट हैज 3 कंपोनेंट्स ओनली एंड द अजम्पशन वाज कि इट इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। और हमने ये कहा कि Y इज इक्वल टू C कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और उसमें हमने एक और अजम्पशन ये ली कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज फिक्स एट अ लेवल ऑफ I बार, और साथ साथ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर G जो है दैट इज अगेन फिक्स्ड एट द लेवल ऑफ G बार। सो ओवरऑल जब हम प्लान्ड एक्सपेंडिचर को देखते हैं तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर में जो चेंजेस आ रही हैं दे आर ड्यू टू द चेंजेस इन द कंजम्पशन, और कंजम्पशन का हमने ये कहा इज अ फंक्शन ऑफ द डिस्पोजेबल इनकम। और डिस्पोजेबल इनकम को जैसे पहले भी हमने लेक्चर्स में डिफाइन किया था कि नेशनल इनकम माइनस द डायरेक्ट टैक्सेस गिव्स अस द डिस्पोजेबल इनकम। और जब हमने प्लान्ड एक्सपेंडिचर कैपिटल लेटर E को ड्रा किया एज अ कर्व, तो उसका जो स्लोप है दैट इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्योंकि हमारा I इज फिक्स्ड एट I बार एंड G इज फिक्स्ड एट G बार, एंड प्लान्ड एक्सपेंडिचर E जो है वो चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द कंजम्पशन। और कंजम्पशन की चेंजेस जो है they are basically reflected in the slope of the planned expenditure curve E। और दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं एक्चुअल एक्सपेंडिचर एंड प्लान्ड एक्सपेंडिचर के साथ, तो जब हमारी 45 डिग्री लाइन जो है दैट रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम पॉइंट्स वेयर हमारी एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो केन्सियन क्रॉस में हमारे पास इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट जहां पे हमारे पास planned expenditure is equal to the actual expenditure। और फिर हमने ये कहा कि इस इक्विलिब्रियम में हमारे पास चेंज जो है वो आ सकती है whenever we go for any exogenous shift in our curve। और उस exogenous shift में we started with कि फिस्कल मेजर है कि हम ये कहें कि अगर G जो है वो चेंज हो जाता है कि गवर्नमेंट जो है increases its expenditure or the purchases, और जब गवर्नमेंट की परचेजेस बढ़ी तो उसकी वजह से हमारा इनकम लेवल जो है वो भी बढ़ गया। सबसे पहले गवर्नमेंट की परचेजेस बढ़ने से हमारा प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो है कर्व दैट शिफ्टेड अपवर्ड, एंड एज अ रिजल्ट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम Y जो है दैट इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस लेवल।
अब चेंज इन जी की वजह से वाई या इनकम में कितना इजाफा हुआ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में, दैट वी ट्राई टू मेजर विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट परचेजेस मल्टीप्लायर. और गवर्नमेंट परचेजेस मल्टीप्लायर जो है उसने हमें ये कहा कि अगर the only factor is change in G and the slope of the planned expenditure curve is marginal propensity to consume, तो उसमें हमारे पास change in Y is equal to 1 over 1 minus MPC into change in G. और वो हमने देखा कि change in Y was greater than the change in G because of the multiplier effect. कि first time जब हमारी G बढ़ी तो planned expenditure बढ़ गया और इनकम बढ़ गई. Then because of the increase in income, again disposable income बढ़ी and consumption बढ़ी, and then again an increase in income, and then we kept on moving in rounds and rounds, and finally हमारे पास जो change in Y थी that was more than the change in G. उसके बाद हमने दूसरी फिस्कल पॉलिसी को देखा जो कि था टैक्सेस की, और हमने ये कहा कि अगर हमारे टैक्सेस जो हैं वो कम हो जाते हैं, लेट्स अज्यूम, तो उसकी वजह से भी हमारा जो है डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी और कंजम्पशन बढ़ जाएगी. लेकिन टैक्स का जो मल्टीप्लायर था दैट वाज स्मॉलर देन द गवर्नमेंट परचेजेस मल्टीप्लायर. रीजन मीन कि हमारी गवर्नमेंट परचेजेस जो है डायरेक्टली हमारे प्लान एक्सपेंडिचर को डिटरमिन करती हैं, जबकि टैक्सेस जो है दे अफेक्ट द डिस्पोजेबल इनकम, और फिर डिस्पोजेबल इनकम जो है वो चेंज करती है कंजम्पशन को. इसलिए साइज ऑफ द टैक्स मल्टीप्लायर वाज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर. लेकिन इफेक्ट यही था कि अगर हमारे पास टैक्स कट जो है $1 से होते हैं तो इनकम जो है वो इंक्रीज करती है बाय मोर देन $1 के मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट जो है वो मौजूद था. एंड देन फाइनली विद द हेल्प ऑफ द केन्सियन क्रॉस वी डिराइव द IS कर्व. और IS कर्व में हमने ये देखा कि अगर हमारे पास गिवन लेवल ऑफ फिस्कल पॉलिसी हो और उसके साथ all the combination of the real interest rate and the income level which represents the equilibrium in the goods market is reflected in that IS curve. और IS curve को भी हमने कहा कि वो शिफ्ट करेगा outward and inward because of the exogenous changes in the fiscal policy as well as in the monetary policy. फिर हमने पिछले लेक्चर में ये कहा कि हम IS कर्व का जो है व्यू देख सकते हैं फ्रॉम द मनी मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, और उसमें जो है मनी मार्केट में भी हमने सप्लाई एंड डिमांड के साथ एक्सप्लेन किया कि किस तरह हमारा IS कर्व जो है वो नेगेटिव स्लोप जो है व्हेन वी आर टेकिंग द इंटरेस्ट रेट ऑन द Y एक्सिस एंड द इनकम ऑन द X एक्सिस. एंड आफ्टर दैट वी मूव टू द मनी मार्केट. और जिस तरह हमने केन्सियन क्रॉस को बेसिस बनाया फॉर द डेरिवेशन ऑफ द IS कर्व, तो यहाँ पे हमने मनी मार्केट के अंदर लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी को जो है वो बेसिस बनाया इन ऑर्डर टू डिराइव द LM कर्व. बिफोर द डेरिवेशन ऑफ द LM कर्व वी टॉक्ड अबाउट द इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट. मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में हमने ये कहा कि इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट विल टेक प्लेस जब हमारे पास डिमांड फॉर द लोनेबल फंड्स इज इक्वल टू द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स. तो जब हमारे पास डिमांड फॉर द लोनेबल फंड्स जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ द रियल इंटरेस्ट रेट, कि अगर हम इन्वेस्टमेंट्स एंड द सेविंग्स ले ऑन द X एक्सिस और इंटरेस्ट रेट ले ऑन द Y एक्सिस, तो इंटरेस्ट रेट जो है बेसिकली इट रिफ्लेक्ट्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी. अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाएगा तो लोग जो है डिमांड फॉर मनी कम कर देंगे, क्योंकि वो उस मनी को इन्वेस्ट करना चाहेंगे किसी प्रॉफिटेबल वेंचर में. देयरफॉर जो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी बढ़ जाने की वजह से डिमांड फॉर मनी कम हो जाता है. सो वी हैव अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड फॉर मनी कर्व. उसके साथ साथ जब हम सप्लाई ऑफ मनी की बात करते हैं, फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास मनी सप्लाई अगर गिवन है, वी से कि M इज इक्वल टू M बार, एंड वी आल्सो से इन द शॉर्ट रन हमारे प्राइसेस आर स्टिकी, दे आर नॉट दैट फ्लेक्सिबल, एंड द P इज आल्सो इक्वल टू P बार. Therefore, supply of the real money balance is M over P. It is fixed and is reflected with the help of a vertical supply for loanable funds market. अब हमारी loanable funds market जो है that will be in equilibrium where the demand for money is equal to the supply for money.
اور اس کے بعد بفور دی ڈیریویشن آف دی LM curve ہم نے یہ کہا کہ لیٹس assume a situation کہ جس میں ہمارے پاس ڈیمانڈ فار منی از آلسو اے فنکشن آف دی لیول آف انکم، کہ اگر ہماری انکم بڑھ جاتی ہے تو اس سے ہماری ڈیمانڈ فار منی بھی بڑھے گی، کیونکہ وی وڈ لائک ٹو کنزیوم مور اینڈ فار دیٹ وی نیڈ مور منی فار دی ٹرانزیکشن پرپزز. تو انکم بڑھنے سے ہماری ڈیمانڈ فار منی فار ٹرانزیکشن پرپزز بڑھ جائے گی، اور جس کی وجہ سے اگر ہم بات کرتے ہیں ڈیمانڈ کرو ویئر وی ہیو ٹیکن دی انٹرسٹ ریٹ آن دی y axis and the supply and demand for money on the x axis, in that particular graph what happens is کہ ہمارے پاس جب انکم بڑھتی ہے تو ہمارا ڈیمانڈ فار منی کرو جو ہے وہ شفٹ کرے گا آؤٹ ورڈ، اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس ورٹیکل اگر سپلائی آف منی کرو ہے تو ریزلٹ کیا ہوگا، ہمارا انٹرسٹ ریٹ جو ہے دیٹ ول انکریز. اور اسی ایکولیبریم سچویشن سے جہاں پہ ہمارا انکم لیول جو ہے چینج ہونے کی وجہ سے ہمارا ڈیمانڈ کرو شفٹ آؤٹ ورڈ کیا اینڈ ایز اے ریزلٹ جو ہے انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا، وی کین ڈرائیو دی LM کرو. اور LM کرو ہم نے ڈرائیو کیا جہاں ہمارے پاس انکم لیول بڑھ گیا تو ساتھ ساتھ انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا. سو LM کرو واز گیونگ اس اے پازیٹیو ریلیشن شپ بٹوین دی انٹرسٹ ریٹ اینڈ دی انکم لیول. Once we have drawn the IS curve which is negatively sloped and it represents equilibrium in the money market, in the goods and services market, and then we also derive the LM curve which represents equilibrium in the money market. We combine both of them together and we talk about the equilibrium condition. اور اس equilibrium میں ہم نے یہ دیکھا کہ IS and the LM curve gives us a unique combination of انٹرسٹ ریٹ اینڈ دی انکم لیول جس پہ دونوں مارکیٹ جو ہیں وہ اکولیبریم میں تھی. اور اس اکولیبریم میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس ایک ایسا ریئل انٹرسٹ ریٹ اینڈ دی انکم لیول موجود ہے جس میں ہمارے پاس منی مارکیٹ بھی اکولیبریم میں ہے اینڈ گڈز اینڈ سروسز مارکیٹ بھی اکولیبریم میں ہے ان دا شارٹ رن آف کورس. تو یہ تو تھا ہمارا پچھلا لیکچر جس میں ہم نے IS اینڈ دی LM کرو کو یوز کرتے ہوئے شارٹ رن اکولیبریم کی بات کی. آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اسی ٹاپک کو آگے کنٹینیو کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ پالیسی جو ہے مختلف پالیسیز جو ہے گورنمنٹ پالیسیز جس میں ہمارے پاس ایک طرف فسکل پالیسی ہے اور دوسری طرف ہمارے پاس مانیٹری پالیسی ہے کہ مانیٹری پالیسی اینڈ دی فسکل پالیسی کس طرح افیکٹ کرتی ہے ہمارے اکولیبریم کو. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہماری جو فسکل پالیسی ہے اس میں ہمارے پاس G ہے گورنمنٹ ایکسپینڈیچر اینڈ دی ٹیکسز ہے، اور مانیٹری پالیسی ہے ہمارے پاس اس میں چینج ان منی سپلائی ہے، اور ایٹ ٹائمز جو ہے سینٹرل بینک فوکس کرتا ہے انٹرسٹ ریٹ کو بھی ایز اے ٹارگیٹ. تو دونوں فسکل اینڈ مانیٹری پالیسیز جو ہیں وہ آپس میں کس طرح انٹریکٹ کرتی ہیں کہ اگر ایک پالیسی چینج آئے تو دوسری پالیسی جو ہے اس کو کس طرح اکاموڈیٹ کر سکتی ہے. اس کے بعد ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ایگزوجینس شاکس جب آتے ہیں IS سائڈ پہ IS کرو کو شفٹ کرنے کے لیے اور LM کرو کو شفٹ کرنے کے لیے ہاؤ دی اکولیبریم از افیکٹڈ بائی دی ایگزوجینس شاکس. اور فائنلی ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ہمارا یہ IS اینڈ LM ماڈل جو ہے اس کی بیسس پہ ہم ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو جو ہے وہ کس طرح سے ڈرا کر سکتے ہیں. تو ہم اپنا آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں ود دی ہیلپ آف این اوور ویو آف کہ اب تک ہم نے کیا کیا اور ہم کہاں تک جانا چاہ رہے ہیں. سو وچ مینس کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے بگر پکچر جس میں کچھ اسٹیپس ابھی تک آج کے لیکچر تک ہم نے لے لیے ہوئے ہیں اور کچھ اسٹیپ وی آر موونگ فارورڈ ان ٹوڈیز لیکچر اینڈ probably another lecture to come. We started with the Keynesian cross. اور اس میں ہم نے کہا کہ equilibrium is where the planned expenditure is equal to the actual expenditure, and with the help of the Keynesian cross we derive the downward sloping IS curve جب پہ interest rate and the income level are the two variables. Then we explained the theory of the liquidity preference, and with the help of the theory of the liquidity preference we derive the LM curve. اور LM curve جو ہے ہمارا it was an upward sloping curve. Again we have taken the interest rate on the x-axis and the income on the y-axis. پھر with the help of the IS curve and the LM curve we derived what is known as the IS-LM model. تو پچھلے لیکچر تک ابھی ہم نے IS and the LM model derive کیا and we have talked about the equilibrium condition. Now
in today's lecture and few more lectures to come, हम इसी IS and LM मॉडल को यूज करते हुए एग्रीगेट डिमांड कर्व को डिराइव करेंगे, एंड देन we are going to combine the aggregate supply curve with the aggregate demand curve, and that will give us the model of the aggregate demand and aggregate supply. और ये aggregate demand and aggregate supply का मॉडल जो है will give us the explanation of the short run fluctuations in the economy. कि हमारे पास basically focus is कि why the short run fluctuations in the economies that take place, कि what are the factors behind this, और उसमें जो है हम एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल को यूज करेंगे. एग्रीगेट डिमांड को अगर हम ट्रेस करें बैकवर्ड तो उसमें हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं. एक है हमारे पास IS विच इज द गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट इक्विलिब्रियम, और दूसरा हमारे पास है LM विच इज द मनी मार्केट इक्विलिब्रियम. उन दोनों के पीछे भी हमारे पास LM के पीछे लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी और IS के पीछे हमारे पास केन्सियन क्रॉस थ्योरी है. तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर, जिसमें हम वही IS LM मॉडल को ही इक्विलिब्रियम से लेके विल मूव फॉरवर्ड, एंड फाइनली एट द एंड ऑफ द लेक्चर वी आर गोइंग टू डिराइव द एग्रीगेट डिमांड कर्व. In between, we will be talking about certain exogenous changes, policy effects, and the shocks in the economies. So, in IS-LM model, the equation for the IS curve is that y is equal to C of y minus t bar plus I of r plus g bar. यानी हमारा actual expenditure is equal to planned expenditure, and that planned expenditure is based on the consumption, investments, and the exogenous level of g, which is g bar. दूसरी तरफ हमारे पास LM कर्व जो है दैट रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट, और उसकी इक्वेशन है हमारे पास M बार ओवर P बार इज इक्वल टू L ऑफ R एंड Y. कि हमारे पास जो मनी सप्लाई है, सप्लाई ऑफ रियल बैलेंसेस इज इक्वल टू द डिमांड फॉर द रियल बैलेंसेस, एंड द डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस इज अ फंक्शन ऑफ द इंटरेस्ट रेट एंड द इनकम लेवल. तो इस इक्विलिब्रियम के बाद वी वुड लाइक टू सी कि हमारे पास पॉलिसीज जो है, पॉलिसी मेजर्स जो है वो किस तरह इफेक्ट करती हैं हमारे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड द इंटरेस्ट रेट. इस पर्टिकुलर ग्राफ में हमारे पास IS एंड द LM कर्व जो है मनी मार्केट एंड द गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट के इक्विलिब्रियम का बता रही है. हमारे पास R1 एंड Y1 जो है ये ऐसा इंटरेस्ट रेट और द इनकम लेवल है जिसमें दोनों मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम में है. तो अब हम देखते हैं कि वंस वी स्टार्ट विद द इक्विलिब्रियम, अब हमारे पास एक्सोजेनस पॉलिसी चेंजेस जो हैं वो किस तरह हमारे इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करती हैं या इन्फ्लुएंस करती हैं. तो जब हम पॉलिसीज की बात करते हैं तो हमारे पास दो एरियाज हैं पॉलिसी मेजर्स की. एक है फिस्कल पॉलिसी और दूसरी है मॉनेटरी पॉलिसी. तो फिस्कल पॉलिसी में हमारे पास दो पॉलिसी टूल्स हैं, एक है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और दूसरा है हमारे पास गवर्नमेंट टैक्सेस. मॉनेटरी पॉलिसी में जो कॉमनली यूज टूल है दैट इज ऑफ द मनी सप्लाई. सो द पॉलिसी एनालिसिस विद द IS-LM मॉडल, we have the equation for the IS curve which is y is equal to C of y minus t bar plus I of r plus g bar, and then we have the equation for the LM model which is M bar over P bar is equal to L of r and y. Now the policy makers can affect the macroeconomic variables with fiscal policy of G and T and the monetary policy of the M. तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं फिस्कल पॉलिसी मेजर से, और उसमें हम ये देखते हैं कि what will happen to our equilibrium when there is increase in the government expenditure. जब हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो केन्सियन क्रॉस में भी हमने ये देखा था कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने के साथ हमारा प्लान्ड एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, और वो एक्सपेंडिचर बढ़ जाने की वजह से इनकम भी चेंज होती है. उसके बाद जब हमने IS कर्व ड्राव किया था तो उसमें भी हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास जी चेंज होती है तो हमारा IS कर्व विल शिफ्ट आउटवर्ड. सो हियर ऑन दिस स्लाइड वी हैव रिफ्लेक्टेड द इंक्रीज इन द गवर्नमेंट परचेजेस. अब हमारा IS कर्व विल शिफ्ट आउटवर्ड टुवर्ड्स राइट बाय एन अमाउंट विच इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC इंटू चेंज इन जी. तो हमारे पास जो IS कर्व जो है वो शिफ्ट किया है फ्रॉम IS1 टू IS2, द ब्रोकन लाइन IS कर्व. तो ये टोटल चेंज जो है वी हैव रिफ्लेक्टेड एज नंबर 1 दैट एरिया इज ग्रेटर देन इफ यू लुक एट द एरिया विच इज एरिया नंबर 3 विच इज Y1 टू Y2.
کہ ہمارے پاس جب ٹوٹل شفٹ جو ہے آئی ایس کی دیٹ از IS1 to IS2 لیکن ہماری انکم لیول جو ہے وہ اتنا نہیں بڑھا. وائی؟ بیکاز ایز اے ریزلٹ ہمارے پاس انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بھی بڑھ گئے ہیں فرام R1 to R2. کہ ہمارا اولڈ اکولیبریم تھا ایٹ این انٹرسٹ ریٹ آف R1 اینڈ انکم لیول آف Y1. IS کب شفٹ ہوا فرام IS1 to IS2 نیو اکولیبریم کے اوپر ہمارے پاس ہائر انٹرسٹ ریٹ ہے R2 اینڈ ہائر انکم لیول ہے Y2. اب ہمارے پاس جو ہے ٹوٹل چینج ان Y is not exactly equal to the total shift of the IS1 because of the higher interest rate. کہ جب انٹرسٹ ریٹ ہمارے بڑھ گئے تھے تو اس کی وجہ سے ہماری انویسٹمنٹ بھی کم ہو گئی بیکاز وی سیڈ کہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ نیگیٹولی ریلیٹڈ ہے. تو جب ہمارے انٹرسٹ ریٹ بڑھ گئے تو ہماری انویسٹمنٹ جو ہے کم ہونے کی وجہ سے ہماری انکم جو ہے وہ اسکویز ہو گئی. تو اوور آل ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم ایگزاجنسلی دیکھیں شفٹ کریں ہماری گورنمنٹ پرچیزز کو تو IS کب جو ہے وہ شفٹ کرتا ہے بائی اے لارجر ڈسٹینس لیکن ہماری جو انکم لیول ہے اس میں اتنا پورا چینج نہیں آتا بیکاز آف دی فیکٹ کہ ہمارا LM کرو کی موجودگی کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھ گیا اور انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے کی وجہ سے ہماری انویسٹمنٹ کم ہوئی اینڈ دیئر فور ا ڈیکریز ان دی اوور آل انکم لیول. تو یہ تو تھا ہمارا ایک پالیسی میئر وچ از دی چینج or increase in G. Now let's look at the other policy measure which is the taxes. So a tax cut basically will increase the government revenue. But on the other hand consumer side پہ ہمارے پاس جو tax cut ہوگا وہ disposable income بڑھا دے گا. Because we said کہ ہمارے پاس consumption جو ہے that is a function of the disposable income. اور ٹیکس کم ہونے کی وجہ سے ڈسپوزیبل انکم جو ہے وہ بڑھ جائے گی اینڈ دیئر فور کنزمپشن جو ہے وہ بڑھ جائے گی. اینڈ وی ہیو شون دیٹ آن دس پرٹیکولر سلائڈ ہیئر بیکاز کنزیومرز دے سیو 1 - MPC آف دی ٹیکس کٹ دی انیشیل بوسٹ ان اسپینڈنگ از اسمالر فار چینج ان T دین فار این ایکول چینج ان G اینڈ دی IS curve shift by -MPC over 1 - MPC ٹائمس چینج ان T. کہ جب ہمارے پاس ٹیکس کٹ ہوتا ہے تو اس ٹیکس کٹ کا فل بینیفٹ از ناٹ ریفلیکٹڈ ان ٹرمز آف انکریز ان کنزمپشن کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ انکم جب بڑھتی ہے تو انڈیویجولز اس کا کچھ پورشن جو ہے وہ کنزمپشن پہ لگاتے ہیں اور کچھ پورشن جو ہے اس کا سیو کرتے ہیں. تو جب ہمارے پاس کنزمپشن بڑھتی ہے تو اٹ از لیس دین دی انکریز ان انکم ا پورشن آف دیٹ انکریز ان انکم جو ہے دیٹ از سیفڈ. سو ایز اے ریزلٹ جب ہم IS کرو کی شفٹنگ کو دیکھتے ہیں تو شفٹ ان دی IS کرو ڈیو ٹو دی ڈیکریز اور دی کٹ ان دی ٹیکسز از لیس دین شفٹ ان دی IS کرو ڈیو ٹو دی انکریز ان G. سو دیٹ بیسیکلی از ریفلیکٹڈ آن دس سلائڈ ہیئر کہ جب ہمارا اولڈ اکولیبریم لیول تھا وہاں پہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ از R1 اینڈ انکم اکولیبریم انکم لیول از Y1. ٹیکس کٹ کی وجہ سے ہمارا IS curve has shifted from IS1 to IS2 broken line, but that shift is smaller than the increase in G. But as a result, ہمارا interest rate has increased from R1 to R2 and the income level has increased from Y1 to Y2. So the effect on R and Y are smaller for change in T than for an equal increase or change in G. اب ہم آتے ہیں اپنے تیسرے پالیسی میئر کی طرف اور دیٹ از دی مانیٹری پالیسی کہ اگر ہمارے پاس مانیٹری پالیسی چینجز آئیں جو کہ ہمارے پاس منی سپلائی از ون آف دی ویریبل تو اس سے جو ہے اکولیبریم لیول آف انکم اینڈ انٹرسٹ ریٹ کو کیا ہوگا کیا ریزلٹ ہوگا ان IS اینڈ دی LM ماڈل. تو مانیٹری پالیسی میں ہم لے رہے ہیں این انکریز ان M. اب جیسے کہ ہم نے پہلے کہا کہ ہمارے پاس جو LM کرو جو ہے دیٹ از ڈران فار اے گیون لیول آف منی سپلائی. اگر منی سپلائی ہماری کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے تو ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارا سپلائی آف منی کب شفٹ کرے گا ان دا منی مارکیٹ اور اس کی وجہ سے ہمارا انٹرسٹ ریٹ چینج ہوگا اینڈ ایز اے ریزلٹ ہمارے پاس جو ہے LM کرو بھی شفٹ کرے گا کہ جب ہمارے پاس چینج ان M از پازیٹیو دیٹ از دیر از انکریز ان دی منی سپلائی تو دین وٹ ہیپنس اٹ ول شفٹ آور LM کرو ڈاؤن اور ٹو دی
right. Old equilibrium is at an interest rate of R1 and an income level of Y1. Because of the increase in the money supply, हमारा LM curve जो है shift कर रहा है from LM1 to LM2. At the new equilibrium हमारे पास interest rate has decreased from R1 to R2 and the income level has increased from Y1 to Y2. And why is that so? कि जब हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हुआ R1 से R2 पे, तो उसकी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एंड द इंटरेस्ट रेट जो है दे आर नेगेटिवली रिलेटेड. इंटरेस्ट रेट जो है दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो जब हमारा इंटरेस्ट रेट कम हुआ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो गई, तो इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ने की वजह से हमारा इनकम लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया. सो द इनकम हैज इंक्रीज फ्रॉम Y1 टू Y2. अब ये तो था इंडिपेंडेंटली जब हम बात कर रहे थे कि फिस्कल पॉलिसी चेंजेस in the form of the increase in G or a tax cut, and independently monetary policy changes in the form of increase in M. Now let's look at the interaction among the policy variables. कि अगर हमारे पास एक policy variable change होता है तो दूसरा policy variable जो है उसको किस तरह जो है accommodate कर सकता है. तो we start with the one where we are talking about an increase in G. कि गवर्नमेंट जो है अगर G बढ़ाती है तो उसके जवाब में मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी विच इज द सेंट्रल बैंक वो किस तरह इसको रिस्पॉन्ड बैक करता है. कि एक पॉलिसी चेंजेस फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड द फिस्कल मेजर, एंड इन दैट फिस्कल मेजर वी हैव अज्यूम्ड कि गवर्नमेंट परचेजेस बढ़ी हैं, एंड वी वुड लाइक टू लुक एट द रिस्पॉन्स ऑफ द सेंट्रल बैंक. अब सेंट्रल बैंक कैन रिस्पॉन्ड टू दिस इंक्रीज इन परचेजेस in three different forms. The first possibility is कि central bank जो है it holds the money supply constant. The second possibility is कि central bank holds R constant or the real interest rate constant. And the third possibility is कि central bank holds Y or the income level constant. So we are talking about three possible responses of the central bank. Fiscal policy measure is increase in G. And as a result, the response of the central bank can be number one, कि money supply remains constant. The second possibility is the interest rate is held constant. And the third possibility is कि income level is taken as constant as the target for the central bank. तो अगर हमारा सेंट्रल बैंक जो है ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 इनमें से कोई भी लेता है तो देन हमारा इक्विलिब्रियम सिचुएशन जो है दैट विल बी डिफरेंट. So let's analyze all of these responses of the central bank as a change in response to a change in the increase in aggregate expenditure, government expenditure. तो उसमें हम start करते हैं first possibility में, जिसमें central bank does not change the money supply, it takes it as constant. So response number 1, holding the money supply constant. So we have drawn the equilibrium point where IS1, LM1 are intersecting. Interest rate, equilibrium interest rate is R1 and the equilibrium income level is Y1. Now the government increases the G. जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि जब हमारी गवर्नमेंट इंक्रीज करती है G को तो हमारा IS कर्व जो है वो शिफ्ट करता है. तो वी हैव शोन दैट शिफ्ट इन द IS कर्व फ्रॉम IS1 टू IS2. हमारा IS curve has shifted upward from IS1 to IS2 because of the increase in G. Now since the monetary policy or the central bank does not change the money supply, therefore there is no shift in the LM curve. It remains on LM1. So at the new equilibrium level, we experience an increase in R from R1 to R2 and an increase in income from Y1 to Y2. And result is कि change in Y is Y2 minus Y1 and change in R is R2 minus R1. So the situation is कि when the government increases the expenditure and the central bank does nothing, does not change the money supply, as a result interest rate in the economy will increase and the income level will also increase. Let's look at the second response. अब second response में हमारे पास central bank जो है is trying to keep the interest rate constant. The target of the central bank is कि जब G बढ़ा है तो उसके जवाब में
ऐसी मेजर लेनी चाहिए कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कांस्टेंट रहे. प्रीवियसली हमने ये देखा था कि इंटरेस्ट रेट हैज इंक्रीज फ्रॉम R1 टू R2. इसमें इफ द गवर्नमेंट रेजेस G, our IS curve will shift towards right from IS1 to IS2, and as a result हमारा interest rate has increased from R1 to R2 and the income level has increased from Y1 to Y2. Now the objective of the central bank now is to keep the R constant. लेकिन यहाँ पे हमारे पास R जो है बढ़ गया from R1 to R2. Therefore, in order to keep the R constant, what measure the central bank can take? कि central bank is going to increase M and therefore हमारा LM curve will shift from LM1 to LM2. And the result will be our change in Y is equal to Y3 minus Y1 and the change in R is equal to 0. So, in order to keep the R constant, and that constant level is at R1, the central bank has increased the money supply and as a result we experience another increase in the income level from Y2 to Y3. अब हम देखते हैं the third possibility, जिसमें central bank जो है in response to increase in G is trying to keep the income level constant. So let's look at this slide here. So if the government raises G, our IS curve shifts towards right from IS1 to IS2. As a result, interest rate increases from R1 to R2 and the income level increases from Y1 to Y2. So अब government जो है, the objective is to keep the income level constant. Therefore, in order to keep the income level constant, now the central bank will decrease the money supply. So decrease in the money supply will shift our LM curve from LM1 to the broken line LM2. And at that level, the change in Y is equal to 0. We are back to the Y1 and the increase in the interest rate will be from R1 to R3. ये तो था हमारे changes due to the monetary and the fiscal policy change. इसके equilibrium हमारा किस तरह change होगा? जब हमारे पास fiscal policy makers, they make a change, how the monetary policy makers can respond to that change, वो जो है depend करेगा कि हमारी monetary policy maker जो है उनका objective क्या है. There is another possibility and that possibility of the exogenous shock, कि अगर हमारे पास economy में exogenous shocks हों तो उससे हमारा equilibrium जो है वो किस तरह से determine होगा या affect होगा. तो exogenous shocks में भी we can make two categories of the exogenous shocks. एक है हमारा exogenous shocks which will affect our IS curve. उसमें हमारे पास any change which is not coming from within the model, rather it is coming from outside the model. उसमें हम example ले सकते हैं, for example of the stock market. कि if there is an increase in the stock market, boom in the stock market, and as a result लोगों की wealth जो है वो बढ़ जाती है. तो लोगों की wealth बढ़ जाने की वजह से हमारे पास सिनेरियो क्या होगा कि इनकम अवेलेबल फॉर कंजम्पशन विल इंक्रीज एंड एज अ रिजल्ट हमारा कंजम्पशन बढ़ जाएगी और हमारा IS कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट. और IS कर्व के शिफ्ट करने से टुवर्ड्स राइट हमारे पास इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा और इनकम लेवल भी बढ़ जाएगा. इसकी एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल बिजनेसेस और द कंज्यूमर्स दे एक्सपेक्ट के देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिक्रीज in investment or increase in investment due to the investment environment. कि गवर्नमेंट में अगर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो they would like to undertake more investment opportunities. Or if they lose confidence on the investment environment and the government policies, then there will be decrease in the investment which is now exogenous. तो उसकी वजह से भी हमारा IS curve will shift towards right or left. Then there are policy shocks. And those policy shocks और the exogenous shocks जो हैं वो LM साइड पे है. उसमें हम बात कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कि अगर frauds हैं in the use of the credit cards, people start cheating or misusing the cards, therefore लोग जो है use of the credit cards जो हैं वो उनको कम कर देंगे, जिसकी वजह से demand for money जो है वो बढ़ जाएगी and as a result हमारा LM कर्व जो है वो shift करेगा and equilibrium level of income and the interest rate will also change. Similarly,
اگر ہمارے پاس دیر از مور اویلیبلٹی آف دی ATM machines, that will result in lower usage of the cash in hand and therefore demand for money will decrease. تو یہ اس طرح کے جو ایگزاجنس شاکس ہوں گے وہ IS اینڈ LM curve کو شفٹ کریں گے اینڈ ایز اے ریزلٹ ہمارے جو ہے اکولیبریم لیول آف انکم اینڈ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. اب ہم بات کرتے ہیں سینٹرل بینکس پالیسی انسٹرومنٹ کہ سینٹرل بینک کے پاس کون کون سے پالیسی انسٹرومنٹ ہیں جن کے تھرو جو ہے سینٹرل بینک جو ہے وہ اپنے مختلف ٹارگیٹ جو ہے وہ اچیو کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نیوز پیپر میں سپوز کہ اگر سینٹرل بینکس اینڈ دیٹ از ٹرو فار اینی کنٹری سینٹرل بینک کہ اگر وہ انٹرسٹ ریٹ کو کم کرنا چاہتے ہیں کہ they would like to decrease the interest rate by 0.5%. تو اس کے بعد کیا انسٹرومنٹ ہے جس کے تھرو جو ہے سینٹرل بینک جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کو کم کرے گا. ون پالیسی انسٹرومنٹ ان دا ہینڈ آف دی سینٹرل بینک از تھرو دی چینج ان منی سپلائی. تو اگر سینٹرل بینک جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کو کم کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے گا سینٹرل بینک ول انکریز دی منی سپلائی. تو منی سپلائی کے بڑھنے سے ہمارے انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کم ہو جائیں گے. وائی؟ بیکاز انکریز ان منی سپلائی ول شفٹ آر LM curve اینڈ ایز اے ریزلٹ ہمارا اکولیبریم لیول آف انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گا. سو دی منی سپلائی بیسیکلی از این انسٹرومنٹ in the hands of the central bank through which it can achieve the interest rate targets. Now the question arises that most of the time why the central banks they fix the target of the interest rate, the change in the interest rate. Why not to fix a target of change in the money supply? So normally the answer is that the change in the money supply is difficult to measure and feel, whereas change in the interest rate is easy to measure and we can feel it as we make any change. تو اس لیے نارملی جو ہے ہمارے سینٹرل بینک جو ہے وہ پالیسی ٹول جو ہے وہ منی سپلائی کو بناتے ہیں اینڈ ٹارگیٹ جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کو کرتے ہیں. Now let's look at another side of our IS-LM model and that is the ultimate کہ how we can use the IS and the LM model to derive the aggregate demand. آپ کو یاد ہوگا کہ آج کے لیکچر کے شروع میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے کینزین کراس کو استعمال کرتے ہوئے IS curve ڈرا کیا اور پھر لیکوڈیٹی پریفرنس تھیوری کو یوز کرتے ہوئے LM curve ڈرا کیا. پھر IS اینڈ دی LM curve جو ہے اس کے ایکولیبریم سے ہم ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو جو ہے وہ ڈرا کر سکتے ہیں. تو now we are moving towards that step and later on انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو بھی شامل کر کے we'll talk about the aggregate demand and the aggregate supply model that will make us to explain the fluctuations, short-term fluctuations in the economy. تو اب ہم IS and the LM model کو یوز کرتے ہوئے aggregate demand curve کو ڈرائیو کرتے ہیں. So what we have here is on the upper panel IS curve which is downward sloping, we have taken the income on the x-axis, we have taken the interest rate on the y-axis. Downward sloping IS curve and upward sloping LM curve. لیکن جب ہم نے ابھی تک بات کی تھی equilibrium conditions کی IS and the LM model میں throughout our discussion ہم نے assume کیا تھا کہ ہمارے price level is held constant. ہم نے یہ کہا تھا کہ P is equal to P bar. اور جب ہم ایگریگیٹ ڈیمانڈ کی بات کرنا چاہتے ہیں تو ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو ہے دیٹ ریفلیکٹس چینجز ان دی پرائس لیول اینڈ ایز اے ریزلٹ چینجز ان دی کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ. Therefore we are now going to relax that assumption of the sticky prices. Rather we would like to see کہ IS LM ماڈل میں کیا چینجز آئیں گی جب ہمارا پرائس لیول جو ہے وہ چینج ہوتا ہے. So that change we have shown on the upper panel of this particular graph. تو اس پینل میں ہم نے assume کیا ہے کہ there is an increase in the price level. تو جب ہمارے پاس price level بڑھے گا that will result in decrease in the real money balances or the M over P. اور جب ہمارے پاس M over P کم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا LM curve will shift towards left.
ओरिजिनल सॉलिड लाइन LM कर्व की वजह से LM1 which is at a price level of P1, हमारा इक्विलिब्रियम is at an interest rate of R1 and an income level of Y1. जब हमारा प्राइस लेवल बढ़ जाता है फ्रॉम P1 टू P2, उसकी वजह से हमारा रियल बैलेंसेस जो है मनी बैलेंसेस वो कम हो जाने की वजह से हमारा LM कर्व शिफ्ट करता है टुवर्ड्स द ब्रोकन लाइन LM कर्व एट प्राइस लेवल ऑफ P2. हमारा नया इक्विलिब्रियम इज एट अ हायर इंटरेस्ट रेट R2 इन अ लोअर इनकम लेवल ऑफ Y2. जब हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व की, तो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है बेसिकली वो हमें रिलेशनशिप देता है बिटवीन प्राइस एंड द इनकम लेवल. सो व्हाट वी हैव सीन हियर इज कि अपर पैनल में जब हमारे पास प्राइस बढ़ी तो इनकम लेवल जो है वो कम हो गया फ्रॉम Y1 टू Y2, एंड दैट वी हैव रिफ्लेक्टेड इन द लोअर पैनल. One point is our original equilibrium with the price level P1 and income level Y1. When our price level has gone up from P1 to P2, our equilibrium income level has gone down from Y1 to Y2, which means कि हमारे पास aggregate demand curve जो है एक downward sloping demand curve है, which gives us a negative relationship between the prices and the quantity demanded or the income level. अब हम इसी एग्रीगेट डिमांड कर्व के ऊपर सर्टन पॉलिसी मेजर्स का इफेक्ट जो है वो देखना चाहेंगे. तो हम शुरू करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के साथ कि इफ देयर इज अ चेंज इन द मॉनेटरी पॉलिसी तो उससे एग्रीगेट डिमांड कर्व पे क्या इफेक्ट होता है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल बैंक, एंड द सेंट्रल बैंक इज इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई. सो विद द इंक्रीज इन द मनी सप्लाई व्हाट विल हैपन, नाउ वी हैव टेकन द price level as constant at the level of P1. तो जब हमारे पास प्राइस लेवल जो है वो कांस्टेंट है तो उसका इफेक्ट बेसिकली मनी सप्लाई का विल बी देयर ऑन द LM कर्व. बट व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द एग्रीगेट डिमांड कर्व, दैट वी विल सी आफ्टर वी हैव सीन द चेंज और द शिफ्ट इन द LM कर्व. तो हमारे पास ओरिजिनल इक्विलिब्रियम इज द अपर हाफ ऑफ द स्लाइड वेयर IS curve is intersecting with the LM curve with M1 money supply and the P1 price level. R1 and the Y1 is the equilibrium interest rate and the income level. जब हमारे पास मनी सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है तो हमारा LM कर्व जो है वो शिफ्ट करता है टू द ब्रोकन लाइन LM कर्व विद M2 ओवर P1. इससे हमारा इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करता है फ्रॉम R1 टू R2 और इनकम लेवल बढ़ती है फ्रॉम Y1 टू Y2. Now, if we want to show this same change on the aggregate demand curve, तो aggregate demand curve में हमारे पास old equilibrium पे price level is P1 and with that income level is Y1. New equilibrium में still the price level is P1, but we are moving towards a higher income level of Y2. And that is only possible कि अगर हम P1 constant रखना चाहते हैं और higher income level करना चाहते हैं तो we cannot show that on the old demand curve. So we need to shift our aggregate demand curve, और वो शिफ्ट कितनी होगी कि उसी गिवन प्राइस लेवल P1 के ऊपर हमारा इनकम लेवल Y1 से Y2 पे आ जाए. So that we have shown P1 and the aggregate demand curve shift outward from AD1 to AD2. तो जब हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व की, तो एग्रीगेट डिमांड कर्व गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द इनकम लेवल, and that relationship is negative. तो अगर हमारी prices held constant, तो any exogenous change is going to shift our aggregate demand curve to show the change in the income level. तो अब हम जाते हैं अपनी fiscal policy की तरफ, and we would like to see कि fiscal policy की changes जो हैं हमारे aggregate demand को किस तरह affect करती हैं, and that we have shown with the help of this particular graph here. और उसमें भी जब हम फिस्कल पॉलिसी में ये की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी. अब एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में हमारे पास दो ही टूल हैं, और वो दोनों टूल्स क्या हैं कि या हम इंक्रीज कर दें जी को, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को, या हम डिक्रीज कर दें टैक्सेस को. बोथ आर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसीज. जैसे कि हमने पहले देखा था कि जब हम फिस्कल पॉलिसी मेजर लेते हैं तो उससे हमारा IS कर्व जो है
that basically shifts right or left depending on کہ ہمارے پاس انکریز ان جی ہے یا کہ ڈیکریز ان جی ہے, یعنی فزیکل پالیسی ایکسپینشنری ہے یا کہ کنٹریکشنری ہے. سو ہیئر وی آر سیئنگ کہ ایکسپینشنری فزیکل پالیسی انکریز ان جی اور ڈیکریز ان ٹی ول انکریز دی ایگریگیٹ ڈیمانڈ. وائی؟ بیکاز ہمارا آئی ایس کا ول شفٹ فرام آئی ایس 1 ٹو آئی ایس 2. ایز اے ریزلٹ ہمارا انٹرسٹ ریٹ ول انکریز فرام R1 ٹو R2 and the income level will increase from Y1 to Y2. Now there is no change in the price level. Therefore, in order to show a higher income level Y2, we need to shift our aggregate demand curve from AD1 to AD2. تو یہ تو تھا بیسیکلی ہمارا ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو اور اس کے اوپر افیکٹ آف دی فزیکل پالیسی چینج اینڈ دی مانیٹری پالیسی چینج. اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر ختم کروں, آئی ووڈ لائک ٹو سمرائز کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا ٹاپکس جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں. تو آج کے لیکچر میں بیسیکلی وی اسٹارٹیڈ ود دی ڈیریویشن آف دی ایل ایم کرو, کہ ہم ایل ایم کرو کو کس طرح ڈرا کرتے ہیں اور ڈرائیو کرتے ہیں, اور پھر وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دی ایکولیبریم اینڈ دی آئی ایس اینڈ دی ایل ایم کرو اور منی مارکیٹ اینڈ دی گڈز اینڈ دی سروسز مارکیٹ. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری سرٹن پالیسی میجرز جو ہیں وہ کس طرح شفٹ کرتے ہیں ہمارے آئی ایس کرو کو اور ایل ایم کرو کو, اور جس کی وجہ سے ہمارے پاس انٹرسٹ ریٹ اور انکم لیول جو ہے وہ کس طرح سے چینج ہوتے ہیں. ہم نے یہ کہا کہ اگر گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر بڑھتا ہے تو آئی ایس کرو شفٹ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ہماری انکم جو ہے وہ بھی بڑھتی ہے. جی بڑھنے سے انکم بڑھتی ہے, لیکن ہم نے یہ کہا کہ جی جتنی بڑھتی ہے انکم میں اتنا اضافہ نہیں ہوتا. وائی؟ بیکاز آف دی انکریز اور دی شفٹ ان دی آئی ایس کرو ہمارا انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا. انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے کے ساتھ ہماری انویسٹمنٹ کم ہوئی, دیئر فور پارٹ آف دی انکم جو ہے وہ ہمارے پاس دوبارہ ڈیکریز ہو گیا. Then we also talked about the shifts in the LM curve due to the changes in the money supply, and we also looked at the interaction among the fiscal and the policy measures. اور اس میں ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ اگر گورنمنٹ جو ہے انکریز کرتی ہے ایکسپینڈیچر یا جی ایکسپینشنری فزیکل پالیسی ہے اگر ہمارے پاس, تو اس کو ہمارے پاس سینٹرل بینک جو ہے وچ از کنٹرولنگ دی مانیٹری افیئرز, تو سینٹرل بینک جو ہے اس کو کس طرح سے رسپونڈ کرتا ہے. تو وی ٹاکڈ اباؤٹ 3 پاسبلٹیز. فرسٹ پاسبلٹی میں ہم نے بات کی کہ اگر سینٹرل بینک جو ہے منی سپلائی کو کانسٹنٹ رکھتا ہے تو اس سے کیا ہوگا. تو اس سے ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے گا اور انکم لیول بھی بڑھ جائے گا. پھر ہم نے یہ کہا کہ اگر سینٹرل بینک جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کو کانسٹنٹ رکھنا چاہتا ہے تو پھر انکریز ان جی کو کس طرح رسپونڈ کرے گا, اینڈ دیئر وی سیڈ کہ سینٹرل بینک جو ہے دین ول بی انکریزنگ دی منی سپلائی. اینڈ فائنلی وی سیڈ کہ اگر دیر از انکریز ان جی اینڈ سینٹرل بینک وانٹس ٹو keep the income level constant, then again same objective can be achieved through changing the money supply. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ there is a possibility of external shocks, کہ fiscal policy changes and the monetary policy changes are the policy makers' decisions. But there can be certain exogenous changes جو کہ ہمارے آئی ایس اینڈ دی ایل ایم کرو کو شفٹ کر کے ہمارے اکولیبریم لیول آف انٹرسٹ ریٹ اینڈ انکم کو افیکٹ کر سکتے ہیں. آئی ایس کرو کی سائڈ پہ ہم نے یہ دیکھا کہ سپوز اسٹاک مارکیٹ میں بوم آ گیا جس کی وجہ سے لوگوں کی ویلتھ بڑھ گئی اینڈ کنزمپشن لیول بڑھنے کی وجہ سے آئی ایس کرو ول بی شفٹنگ آؤٹ ورڈ, انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھیں گے اور انکم لیول بھی بڑھ جائے گا. اور اگر لوگوں کا کانفیڈینس آن دی انویسٹمنٹ انوائرمنٹ بڑھ جائے گا تو اس کی وجہ سے بھی انویسٹمنٹ بڑھے گی اور اوور آل اکانومی جو ہے اس میں انکم لیول بڑھ جائیں گے. اور پھر اس کے بعد ہم نے ایل ایم سائڈس پہ ایکسٹرنل یا ایگزوجینس شاکس کو دیکھا اور ہم نے یہ کہا کہ اگر بیکاز آف دی فراڈس کریڈٹ کارڈ کا استعمال کم ہو جائے تو منی کی ڈیمانڈ بڑھنے کی وجہ سے ایل ایم کو شفٹ کرے گا, اور دوسری طرف اگر سپوز کہ اے ٹی ایم مشینز وغیرہ زیادہ ہو جائیں تو ڈیمانڈ فار منی کم ہونے کی وجہ سے ایل ایم کرو جو ہے وہ شفٹ کرے گا. اینڈ فائنلی وی ڈیرائیو دی ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو فرام دس ماڈل آف آئی ایس اینڈ دی ایل ایم, اینڈ وی سیڈ کہ اوور آل
अभी तक हमने प्राइसेस को कांस्टेंट अज्यूम किया था, बट इफ वी चेंज द प्राइस लेवल, बिकॉज ऑफ दैट चेंज इन द प्राइस लेवल हमारा LM कर्व शिफ्ट करेगा एंड वी हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द प्राइसेस एंड द इनकम, एंड दैट डिफरेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट्स with the change in the price level and the new income level gives us the aggregate demand curve, which is downward sloping, a negative relationship between the prices and the income levels. और उस एग्रीगेट डिमांड कर्व पे फाइनली फिर हमने देखा कि इफेक्ट क्या होगा हमारी फिजिकल पॉलिसी मेजर्स का और मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स का, और हमने ये देखा कि अगर हम एग्रीगेट डिमांड कर्व को शिफ्ट कराते हैं आउटवर्ड एंड inward due to the increase in G or the increase in M, that basically is equivalent to the external shocks. तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी. डॉक्टर तलत को इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.